Yes, good morning everyone. Today, 23rd of July 2021, further explanation for the seasons of India and total number of season as per the climate condition in India. We will have three seasons. One is hot weather season, that is summer season, cold weather season, that is winter season, and advancing monsoon, that is the rainy season. So yesterday we had completed hot weather season and cold weather season. So please, anyone among you, can you tell me what is hot weather and cold weather season? चाहत, क्या आप बता सकते हैं कि हॉट वेदर सीजन कौन से ड्यूरेशन क्या हो? हॉट वेदर सीजन summer season. Hot weather season means summer season. I'm talking about summer season. Can you tell me the period duration of hot weather season? मैम मार्च टू अक्टूबर March to मैम अक्टूबर sorry beta March to May. March to May. May. March May. then cold season हम लोग कैसे advancing monsoon season what advancing monsoon season कहते हैं इसको rainy season कहते हैं रेनी सीजन जिसको हम कहते हैं उसका सीजन क्या है उसका पीरियड June to September. और इसी के आगे इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आई एम गोइंग टू डिवाइड फर्दर दिस इन टू पार्ट इसको रेनी सीजन जो है इट इज टू पार्ट रेनी सीजन में part 1 is advancing and second is retreating. Advancing means onset, retreating means reversal. Advancing duration कितना है 120 days. That is correctly I have already said that is September. Fine. Then retreating season October to November and first December. उसी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में तमिलनाडु में बारिश पड़ती है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वहां रेनफॉल होती है जब रिट्रीट होकर बाहर जा रहा होता है ये मैंने बताया था आपको सो दिस इज अक्टूबर टू नवंबर देन इन बिटवीन द पीरियड आफ्टर दिस नवंबर के बाद फोर्थ सीजन दैट इज विंटर सीजन जो है वो कौन सा पीरियड आ गया उसमें कौन सा व्हाट इज दैट From December to January. Got it? Please write in this way in your notebook to get clear bifurcation of the seasons. Write down, hurry up. And today I will be going to explain these two. As we have major three season, summer season, winter season and rainy season. Rainy season have two seasons. One is advancing rainy season, another is retreating rainy season. ठीक है? Advancing means onset of rainfall, onset of monsoon. Retreating means reversal of monsoon. Any doubts to anyone? Clear है पुत्र जी? Gauri, Manpreet. यस मैम Okay. Now advancing monsoon. It starts as we know wind always move from dash to dash. कौन बोलेगा?
high pressure area to low pressure area. Very good. Wind always moves from high pressure area to low pressure area. So by June, low pressure condition over the northern plain are being existed. That is why all the Arabian sides movement are being getting entry in India. अब देखो यहाँ पर India की कौन बना के आना चाहते if there is no pressure in the northern area, यहाँ पर northern side पर low pressure area exert हो रहा है, तो definitely high pressure area will come. High pressure area, they will be going to enter in the India two different dates. As on 1st of June, monsoon enters on the foot of India. बिल्कुल टिप पे 1st of June पर एंटर कर जाता है एंड धीरे धीरे यहाँ से इधर और माइनस्वरम में बहुत ज्यादा मैक्सिमम बारिश होती है क्यों क्योंकि इधर से ऊपर का प्रेशर जाता है और वहां क्लाउड्स में जाकर साथ के साथ बर्स्ट कर जाता है. That is why India receive different temperature, different rainfall at a different time. No doubt. So due to in North India, low pressure exert, high pressure get an entry from the Arabian Sea and from the Bay of Bengal toward the Indian monsoon, Indian side. So these trade wind, southeast trade wind, southeast. बात समझ आ गई? South east trade winds are getting the entry. So and warm subcontinental in southern ocean and they cross the equator and blow in the southern part of India, westerly direction and entering. और ये कौन सी part में जाता है? Westerly direction. Westerly directions entering in Indian Peninsula as the southwest monsoon as these wind blow over the warm ocean and they bring abundant of moisture. जब ocean से equator से जब ये हवाएं चलती हैं तो ये ocean से बहुत सारा moisture content लेकर आती हैं. That is why they let huge rainfall in India. So the inflow of these you can say monsoon winds, they create a total change in the weather condition. हमारे इंडिया के weather condition में totally change कर देती है as we receive 250 centimeter of rainfall in the Western Ghats. Western Ghats में हमें more than 250 centimeters rainfall receive होता है. Deccan Plateau, part of Madhya Pradesh, they receive the rain in spite of laying the rain, shadow area. मतलब वहां पर इतनी ज्यादा receive नहीं होती लेकिन फिर भी होती है. The maximum rainfall received in the northern eastern area, that is Mainswaram, Cherrapunji. Season received in northern eastern part of Mainswaram in the southern hills of Khasi Hill. Mainswaram, here it is Cherrapunji. Cherrapunji से 15 किलोमीटर है Mainswaram जहां पर रेनफॉल जो है मैक्सिमम रिसीव होती है. एंड रेनफॉल इन गंगा वैली, इसमें माइनस्वरम की रेनफॉल मैंने 400 सेंटीमीटर भी बताई हुई है. आप एक बार लिख लीजिए 1187 मीट्रिक सेंटीमीटर रेनफॉल. 1187 भी एक बार ऑब्जर्व हुई है. So rainfall in Ganga Valley decreases from east to west. Ganga Valley में गंगा का जो एरिया है means उत्तर प्रदेश का एरिया, पटना का एरिया, यहाँ पर थोड़ी कम रेनफॉल होती है. And when we move from this side to गुजरात साइड, राजस्थान साइड, तो रेनफॉल का जो रेशो है वो कम होता जाता है and get less rainfall. और हमने किया है कि they receive only 10 to 15 centimeter of rainfall. ठीक है. So next आएगा another phenomena associated with the monsoon is tendency to break in the rainfall. Rainfall में काफी change आता है. When
the continued rain for the several days when before the advent of monsoon, that is called burst. ये हमने कल किया था, burst कहलाता है. And that burst cause a मतलब long time rain. और ये लॉन्ग टाइम रेन जो है ये केरला एंड कर्नाटका में जो रेन आती है एकदम से जो आती है, that led mango shower, early ripening mango, or this thing is being done. Early mango ripening is being done. So and इस पीरियड में मतलब मैंगो शावर जो होता है that is also, और उस केरला एंड कर्नाटका में मैंगोज जो है वो अर्ली राइपनिंग होते हैं बिफोर मॉनसून. ठीक है. So another phenomena we have done. So this rainfall is being different at different places. They are interspread by the rainless interval. These breaks in the monsoon are related to the movement of monsoon through, with them moving toward the north or southward, which determine the spiral distribution of rainfall. The axis of monsoon through lies over the plains. रेनफॉल इज गुड इन दीज पार्ट्स. अब देखो रेनफॉल जो है मैक्सिमम गुड कहां पर होती है? ऑन द पार्ट्स ऑन दीज एरियाज. यहां पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है. आफ्टर दैट कुछ यहां पर कोस्टल एरिया में भी रेनफॉल है, बिकॉज़ सेंटी ओवर देयर साइड पे रिवर साइड पर यहां रेनफॉल होगी. दिस साइड रेन का पैटर्न जो है वो गिरता ही चला जाए. ठीक है, विदाउट. एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड द अपर साइड, हिमालयन साइड, जैसे जैसे हिमालयन की साइड जाते हैं, दीज हेवी रेन्स ब्रिंग देयर वे दिस वास्टिंग फ्लड. और वहां पर जाके एकदम से मॉइस्चर कंटेंट इतना ज्यादा कंडेंसेशन हो जाता है कि कई बार जो क्लाउड्स है वो बर्स्ट कर जाते हैं. क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, और वो बर्स्ट जिसको हम बादल फटना भी बोल जाते हैं, वो हो जाता है पहाड़ों में कई बार. दैट लेड टू मोर डिस्ट्रक्शन इन दैट एरिया. सो दीज डिप्रेशन फ्रॉम एट द हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल के हेड के ऊपर जो डिप्रेशन जाता है वो ज्यादा जाता है, बिकॉज वहां पर एयर सर्कुलेशन हो ही नहीं पाता और वो वहीं पर ही बारिश कर देती है. यहाँ से जो रेन जाती है वो पूरी की पूरी फ्लो करती हुई जाती है. यहां तक किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है सबको? Monsoon is uncertain in India, as in some area they gives maximum rainfall, but in some area they give scanty rainfall, and it is intensely different from one place to another place, and their intensity of duration we can't say that duration will be properly set for 100 to 120 days. जैसा कि हमने एडवांसिंग ऑफ मॉनसून में लिखा है 100 to 120 days. कई बार इसमें जो वेरिएशन है वो लॉन्ग भी चली जाती है और वो शॉर्ट भी चली जाती है. सो नेक्स्ट आ जाता है आपका रीट्रीटिंग और पोस्ट मॉनसून. सेकेंड फेज आ जाता है आपका रीट्रीटिंग एंड पोस्ट मॉनसून. ये जो आता है ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. We have already made this chart, so it will be helpful to you to learn this in a proper way. And the movement of the wind toward the reversal side from the westerly part toward the southern part. The reversal of the wind in the month of October from the westerly part to the southern, वहां से reversal आना शुरू हो जाता है. With as the low pressure is being created over this area, और वहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हाई प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाता है. So they replaced by the high pressure southwest monsoon winds weak. ये जो यहाँ से जा रही है winds ये स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो वहां से winds आ रही होती है वो वीक होती है, because much you can say water content or water moisture is not there in that, so they are much weaker and start withdrawing gradually. By the beginning of October, the monsoon withdrawal from the northern plain. Northern plain में हमारे अक्टूबर से जब निकलता है तो कोई रेनफॉल नहीं होती, चुपचाप निकल जाता है, हमें सिर्फ हवाएं चलती है, फील होती है, बारिश नहीं आती है. So the month October November form the period of transition from hot rainy season to dry winter condition.
At that time the wind blow, they create more dryness in our body also, more dryness in the environment also. All the trees trying to shed their leaves. At that time they are start shedding their leaves, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो ड्राई winds जो होती हैं, they put attack on the moisture content things. उस वक्त डेंगू भी फैलता है हाँ जी बेटा हरकिरत, मैम, उस वक्त डेंगू भी फैलता है ना, उस टाइम डेंगू भी फैलता है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो जितना बारिश हुई होती है और वाटर जो है उसमें मतलब रुकना शुरू हो जाता है, और वो ड्राई एरिया के कारण, ड्राई विंड्स के कारण उसमें, और आजकल देखो बिल्कुल वेट विंड्स है, मतलब बहुत मॉइस्चर कंटेंट है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी ह्यूमिड. So the retreat of monsoon is marked by clear sky and rise in the temperature. उस टाइम पर टेम्परेचर भी राइज करता है, दिन का टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, धूप बहुत ज्यादा लगती है. And while the day temperature are higher, night temperature is cool and pleasant. Land is still moist, owning the condition of high temperature and humidity. Weather become rather oppressive during the day and commonly known as October heat. दिन में बहुत गर्म, रात को बिल्कुल ठंडा, और स्काई बिल्कुल ब्लू होते हैं उस टाइम पे. दैट लेड टू कंसिडर टू बी एज अ अक्टूबर हीट. वन मार्क क्वेश्चन है यहाँ पर. In the second half of October, the mercury began to fall rapidly in the northern India. यहाँ पर mercury है means temperature. In the month of October, जब दीपावली के दिन आने स्टार्ट होते हैं, तो you can feel the cold, or the weather is temperature is moving down. So at that time low pressure conditions are there and get transferred from Bay of Bengal in the early November. The shift is associated, अब ये वाला पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से देखना. The shift is associated with occurrence of cyclonic depression. यहाँ पर cyclones आना start आ रही है, यहाँ पर cyclones आने start हो जाते हैं. So which originate over the Andaman Sea. The cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain. These tropical cyclones are often very dangerous. आपने अक्टूबर नवंबर में देखा होगा, जाते जाते ये मौसम जो है उड़ीसा में और वहां के आंध्र प्रदेश के एरियाज में, वहां पर जाते जाते ये बहुत ज्यादा मतलब डिस्ट्रक्शन देता जाता है. एंड थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ गोदावरी, Krishna and Kaveri are frequently struck with the cyclones, which cause great damage to life, property. Sometimes these cyclones arrive at the coast in Orissa, West Bengal, Bangladesh, and bulk of rainfall is there at, you can say, Coromandel coast, derived from the depression and the cyclones. उस time पर यहाँ cyclones. Is the point is clear? Any doubt to anyone? If it is clear, please give thumbs up. फिर मैं distribution of rainfall करवा only. मैम हाँ बोलो बेटा. हाँ जी मैम, आपने 1187 मेट्रिक सेंटीमीटर रेनफॉल मौसम में कही थी. माइनस्वरम में गई. ओके मैम, ठीक है. I'll give you detail for that also. Because कल शाम को मैं दूसरी बुक्स में पढ़ रही थी, तो वहां पर यही कंटेंट मुझे साथ में मिला. नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल जो है दैट इज टोटली डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. A part of western coast and northern eastern India receive about 400 centimeter of rainfall annually. It is less than 60 centimeter in the western Rajasthan. अगर राजस्थान की बात करी जाए तो 60 सेंटीमीटर से कम होती है, जबकि ईस्टर्न घाट पे माइनस्वरम वाली साइड पर हमें ये 400 सेंटीमीटर हमारी बुक दे रही है. तो we will go with that this way also, and I will clear that thing also to you. So Rajasthan and adjoining part of Gujarat, Punjab and Haryana, rainfall is equally low in the interior of Deccan Plateau. Central part में Deccan Plateau में भी वहां पर कम rainfall होती है, and eastern of Sahyadris. Why this regions receive less rainfall? क्योंकि यहाँ पर third low pressure area जो है वो exert होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है और लो प्रेसिपिटेशन होता है. और इसी तरह से ले वाली साइड में जम्मू कश्मीर पर भी
लो प्रेशर एक्सर्ट तो होता है, लेकिन वहां पर मॉइस्चर जाते जाते बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस वहां पर सिर्फ स्नो ही होता है. द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल. Snow is restricted only in the Himalayan region. Owning the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable. किसी साल ज्यादा होती है, किसी साल कम होती है. Variability is high in the region of low rainfall area. जहां पर कम, सेंट्रल इंडिया में जहां कम होती है वहां पर थोड़ा सा वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है. सच एज राजस्थान, कई बार राजस्थान में ज्यादा बारिश हो जाती है और कई बार होती ही नहीं है. Gujarat and leeward side and Gujarat West Ghat and such wild area, high rainfall is liable to be affected by floods. Area with low rainfall are with drought and drought area. They might receive the drought in that area. आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे एरियाज में फ्लड्स आ रहे हैं. Number of videos are getting viral from different places where the floods are coming. So this is what uneven distribution of rainfall at different places. Any doubt to anyone, beta ji? कोई doubt है बेटा? अंकित, परनीत, clear है? Monsoon as a unifying bond. Next करवा दोगे? अभी next अगली क्लास में करवा. What do you say, परनीत? चलो recapitulation लेती हूँ. हाँ जी, what is retreating of monsoon? कौन बोलेगा? Ma'am, it means end of monsoon season. हाँ जी पुत्र. Ma'am, it means end of monsoon season. It means moving back or withdrawal of monsoon. Monsoon has two phases. Aryan, monsoon has two phases. One is advancing, another is dash. बताइए आर्यन कौन सा है? Aryan, one is advancing, another is dash. आर्यन बोल पड़ो. चलिए चाहत. Retreating. Very good. It is retreating. Now, another name of hot weather. Another name of hot weather. Ankit. Season. And summer season. Summer season. Okay. Another name of cold weather. And winter. Winter season. Okay. Winter season starts from Aryan. Winter season starts from. Winter season starts from. Yes, Aryan. November, November. November, November to February, November to February. Okay. Next question. For how many days advancing season remain in India? 100 to 120 days. Very good, Ram. 100 to 120 degree. Okay. Next question is, Jaisalmer receive the rainfall, annual rainfall. Yes, Aryan. Jaisalmer receive annual rainfall. Kritika. 10 to 15 centimeter. 10 to 15 centimeter. Got it? Cyclones are the result of dash monsoon. Cyclone in the Coromandel coast are the result of dash monsoon. Rohan. Cyclones are the result of dash monsoon in Coromandel coast. हाँ जी परनीत. Retreating monsoon. Yes, it is retreating monsoon. Okay, fine. Very good. Next question. What is
Full form of ITCZ. What is the full form of ITCZ? Intertropical convergence zone. Intertropical convergence zone. Okay, very good. What is SO? Southern Southern Oscillation. Oscillation. Okay, what is Southern Oscillation? Can anyone help me to get understand? What is Southern Oscillation? याद है? Among the periodic change in pressure condition is known as southern oscillation. Can you repeat? It was not at all audible to me. The periodic change in pressure. Periodic change in southern the ocean currents. Periodic change in the ocean currents from Indian Ocean to Pacific Ocean, from Pacific Ocean to Indian Ocean, reversal in between 2 to 5 years. That is called Southern Oscillation. Clear hai Noorjot? Yes, ma'am. Okay. So please write it in the normal language. If you are not able to learn from the book language, you can write in the normal language. Okay. Next, Rajata, what are jet streams? Jet streams. Upper air circulation movement of air from westernward side is known as jet stream. Upper air circulation moving toward westernward side, that is called jet streams. Got it? Now, next question. What is latitude? What is latitude? कौन बताएगा? Simple भाषा में बता दीजिए. You can just convey it in the single language. Ma'am, the distance of a place north or south. The Distance of a place north or south. Yes, ma'am. yes, बिल्कुल ठीक बोला. Fill the attendance form. आधे तो ऐसे ही एब्सेंट हो गए. क्लास उन्होंने कहा मैम ने तो टेस्ट ही लेना शुरू कर दिया कि why should we take? Okay. The monsoon is taken from the dash word, which means मौसम. Monsoon is taken from the dash word. Arabic word. Arabic word, which means मौसम. And what does मौसम means? Season. Season. Seasons. Mausim means season. Very nice. Okay. Next, Ajata, what is weather? Yes, Ankit. What State is of weather? atmosphere. State of atmosphere. State of atmosphere at a small area for short period. For short period of. For a particular period of time. How we can say distance from the sea affect the temperature of an area or the climate of an area? Hurry up. Please repeat the question. Temperature, I said how the distance from the sea is affecting the temperature of the area. As the distance from the sea increases, there are more variations. There is But variation. when the area is near to a sea, then the climatic variations are less. Very nice. If the place is near the sea, it means variation in the climate conditions are very less. But as we move away or far from the sea, the variation in the climate and temperature will be more. There will be extreme hot weather and there will be extreme cold weather. On the other side, the area near the sea will not observe that kind of variation. There will be a moderate type of climate. Moderate type of temperature. So what are the factors affecting climate? What are the factors affecting climate? बताइए बेटा फटाफट.
altitude, pressure and distance from sea and relief, Oceans and relief currents. Winds. Okay. Wind speed. Wind are of how many types? Ma'am, 3 types. 3 types. बताइए. No, ma'am. Sorry. नूरजोत बताइए फटाफट. Ma'am, Winds. actually, I was talking about pressure and winds. नहीं, मैं प्रेशर की बात ही नहीं कर रही हूँ. मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंड्स आर देयर. मैम 2 2 दानिश Two. कितने तरह के हैं? 2 2. कौन कौन सी हैं? seasonal winds, लोग बुक में जाते हो. सीजनल विंड और लोकल विंड. लोकल विंड. Okay, local wind. Name any 2 local winds. Name any 2 local winds. Loo. Yes, Parneet. Ma'am, Loo. Loo. And second, breeze, Kalpasakhi. Second, write down if you Ma'am, have sea not breeze. noted. If you have not noted, one is Loo in the western, northern western side, like Punjab, Haryana. And second is Kalpasakhi. It is in West Bengal, Kalpasakhi. It is in the month of Baisakhi. That is why it is known as Kalpasakhi. So these are the local winds. Storm dust is there in that area. हाँ जी पुत्र जी, कोई डाउट बेटा किसी ने कुछ पूछना हो? If it is clear, तो last topic जो हमारा रह गया है, unifying bond, monsoon as a unifying bond, because all the seasons are dealing with 1 or 2 festivals. That is why we are considering monsoon as a unifying bond. इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे in the next class. Fine.